They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. आवाज लगाई, but he did not come to them, and then they walked along the river. और दूर पता नहीं कोई पुराना फटा हुआ सा एक carriage इनको दिखाई दिया. So it took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. बोलते हैं थके हारे अपने अपार्टमेंट में चले गए, लेकिन for her it would be a greatest night of her life and she will sleep peacefully. But for her husband it was like he has to be up 4 बजे. ये कितने बजे, sorry, yeah, तो 10 he was to be in the office. ठीक है. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. ठीक है. तो इसने क्या बात सोची, सोने से पहले एक नज़र और दे दूँ अपने आप को, शीशे में देख लूँ जो मैंने आज जो मुझे कमेंट्स मिले हैं, व्हाट आई वोर, हाउ पीपल कॉम्प्लीमेंटेड मी, मैं एक लुक और देखूँ और फिर सो जाऊँ. एंड देन फाइनली केम आउट द क्राई. व्हाट क्राई? उसके जो नेकलेस ने लिया था, दैट वाज नॉट अराउंड हर नेक. लोइसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर. लोइसल सोने की तैयारी कर रहा था, तो उसने बोला क्या मसला हो गया. शी turned towards him excitedly. I have no longer M.M. Forrester's necklace. He arose in dismay. What? How is that? But it is not possible. उसको बोलता है नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ये possible नहीं है. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. He asked, You are sure you still had it when we left the minister's house? तो इसको बोलता है कि हर जगह इन्होंने ढूंढ लिया, चप्पा चप्पा छान मारा, कपड़े जगह जगह कहीं ना मिला. इसने इसको पूछा, बोला जब क्या तुम्हें आर यू श्योर जब तुम वहाँ से बाहर निकली तो तुम्हारे गले में लगा के ही था. Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street we should have heard it fall. It must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you, did you notice what it was? No. तो ये अब सीरीज ऑफ इवेंट्स दिखा रहे हैं. पहले पूछ रहा है वहाँ तो हाँ वहाँ मेरे पास था, फिर बोल रहा है अगर रास्ते में गिर गया होगा हम इसके गिरने की आवाज़ बोलते हैं. और फाइनली मुझे लगता है ये कैब में गिर गया होगा. क्या तुमने नंबर लिया कैब का? वो बोलता है नहीं. वो बोलता है क्या तुमने नोटिस किया? शी सेज नो. दे लुक्ड एट ईच अदर utterly cast down. Finally Loisel dressed himself again. बोल रहे हैं सोने की तैयारी था, लेकिन उसने फिर से अपने कपड़े लगा दिए. I'm going, he said, over the track where we went on the foot to see if I can find it. बोलता है कि नहीं, मैं फिर से जा रहा हूँ ढूंढने के लिए जहाँ से हम रास्ते से खुद बाय फुट चले थे. शायद perhaps it might be there. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. बोलते इसकी क्योंकि she was knowing it is the real diamond necklace, तो इसमें उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ये बेड पे जाए सोने के लिए. Towards 7 o'clock her husband returned. Oh, he had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. क्या बोलते हैं 7 बजे के करीब ये वापस भी आ गया, but he couldn't find anything. He reported it in the police. He just went to the cab offices, advertisement डाल दिया और ये भी डाला अगर कोई किसी को ये नेकलेस मिलेगा तो I am going to give him or her a reward. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. बोलते हैं हर पूरा दिन ये इसी हालत में परेशान हाल थी. तो Loisel शाम को घर आ गया, but unfortunately he had found nothing. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. तो ये इसको बोलता है कि अपनी फ्रेंड फ्रॉस्टियर को लिखो कि मैंने इसका जो क्लास्प है बंद करने का हुक्का वो टूट गया है, तो it will take us time to return it to her. She wrote as he dictated. At the end of a week they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. बोलते हैं एक हफ्ता हो गया लेकिन इनको कोई उम्मीद दिखाई न दी, और फाइनली जो लॉइजल था he was elder to Matilda by 5 years, तो इसको बोलता है कि हमें उसको दूसरा ज्वेलरी ऐसा ही देना चाहिए. In a shop of the Palais Royal they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued 40,000 francs. They could get it for 36,000. ओहो, तो इसी से बोलते हैं मिजरी ऑफ इवेंट स्टार्ट हो गई. एक छोटी सी खुशी के लिए, छोटी सी पार्टी के लिए कैसे मार्टल्डा ने अपने हस्बैंड की अपनी लाइफ
और अपनी जो ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी, शी पुट इट एट स्टेक फॉर हर मियर हैप्पीनेस। तो इनको जो ऐसा ही एक उन्होंने ज्वेलरी शॉप देखा जहाँ पे डायमंड्स थे, तो वहाँ पे इनको कितने में मिल रहा था 40,000 फ्रैंक्स, और इनको फिर मिल जाता 36,000 फ्रैंक्स। ही कुडंट अफोर्ड हेयर 400, लुक हेयर, ही कुडंट अफोर्ड हेयर 400 फ्रैंक्स जो इसने जमा किए हुए थे। ही हैज़ जस्ट kept them for himself. How would he manage here 36,000 francs? Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. तो कुछ पैसे इसके बाप ने छोड़े थे, 18,000. He borrowed the rest. बाकी इसने उधार ले लिया. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's country 36,000 francs. इसने आधों से उधार लिया, आधों से इंटरेस्ट पे पैसा लिया, जहाँ जहाँ दिखा वहाँ से इसने पैसा उधार ले लिया और इसने 36,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए. बट ही वॉज नॉट नोइंग हाउ ही विल रिपे टू दीज पीपल जिससे उसने उधार लिया था. When M. Loisel took back the jewels to M. Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब जब वहाँ पहुँच गई, इसको थोड़ा गुस्सा भी था, तो उसने इसको बोला आपको तो बहुत पहले ही मुझे ये बेचना चाहिए था. यू आर वेरी लेट.